Yeah, if you think about bad situations, it will happen. You shouldn't think about bad situations. It will not happen. That's perfect answer you have given. Huh? You need to be positive. You need to think like good things. Say something meaningful, say something I don't know. I wanna know you better. The way that you talk to me, the way that you make me feel, I don't know if you're real. I wanna put you in that spotlight, looking at you all night. Put you in that spotlight. Oh, you in that spotlight. Oh, you know you're beautiful. You know you're beautiful, and it's like you're untouchable, like you're untouchable. Don't you know? You know you're beautiful. You know you're beautiful. आज मैंने दिन में बहुत सारी जगह कवर की है। आप लोगों ने देखा वेस्ट ऑफ वंडर्स, वो ऐसी जगह थी ना, मतलब वहाँ पे ना 7 वंडर्स को बनाया गया है पूरा वेस्ट से। और ना नेस्ता को ना रिसाइकल बहुत पसंद है, और वो मैसेज देते रहती लोगों को कि मतलब ना संभालिए, प्लास्टिक वगैरह ज़्यादा वेस्ट ना कीजिए। तो हम वहाँ पे गए थे, उसके बाद हम लोकल एरिया घूमे और अभी यहाँ पे आए गुरुद्वारा में। नेस्ता Yeah, it's like a Sikh tradition. Every girl or boy, they need to wear this and they need to go inside. So I'm excited for it now. करता पुरख निरपौ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप आद सच, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। It is like a first time of Nasta in Gurudwara. So how are you feeling? I've made my best meditation when you hear voice of the prayer. Yeah, it's prayer. Yeah, you concentrate on words, and it's easy to take a meditative atmosphere. I think it's, yeah. And what about the food that we were sitting in the langar and we have eaten the food? It was my first time also for the langar, and she also there sitting with me and eating the food. So how you felt that? It is really interesting to eat with a big amount of people, because it's like really cool, energetic to eat with different. It's like in past times people come together, all the families, like all the people from really big families, like deep, really far relatives, and it's really interesting to try food with a lot of people. I will talk to in my language to explain them better. Okay. तो हम अभी गए थे गुरुद्वारा में, तो अभी गुरुद्वारा में मैंने उनको बताया कि मतलब कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं, और हम लंगर भी किए वहीं पे बैठ के सबके साथ, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कराना बहुत ज़रूरी है। लंगर में इतने अमाउंट ऑफ पीपल होते हैं, लोग खाना खाते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो बैठे हैं वहाँ पे गुरुद्वारा में और उन्होंने दर्शन किए, उसके बाद में वहीं पे बैठ के उन्होंने मेडिटेशन किए, और ना जो प्रेयर हो रहा था उनकी वॉइस कान में जाना कितना अच्छा लगता है। मतलब ये ना मतलब एक ना जन्नत बोला जाता है ना, एक हेवन ऑन अर्थ है। गुरुद्वारा में आप कभी भी जाइए, आप कितने भी टेंशन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहोगे, जब वो ना जो प्रेयर होता है ना, जब आप सुनते हो ना, तो आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो और बहुत ही अच्छा लगता है आपको। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा, कभी भी कोई भी कंट्री में हो, वहाँ पे अगर आपको कोई लग रहा है डर वगैरह कुछ है, तो गुरुद्वारा में जाइए, आराम से बैठिए, अपने आप
आपको एक रहता है ना, अच्छा लगता है यार बहुत। लाइफ में कितने तकलीफें रहेंगे ना, सब खत्म हो जाती है, ऐसा लगता है उस टाइम पे। और नेस्ता को मैं इसके लिए लेके आया था क्योंकि वो इंडिया आई थी और थोड़ा एक रहता है ना कि मैं सब चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ। अच्छे से शादी अटेंड की हमने, और फिर मैं उसके बाद में अभी वेस्ट ऑफ वंडर्स दिखाया कि उनको बहुत रिसाइकलिंग वगैरह पसंद थी, तो बोल रहे थे, तो हम लोग वहाँ पे गए, रिसाइकलिंग कैसे यूज़ किया गया है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे आए और गुरुद्वारा में भी बताया कि हमारा इंडियन कल्चर कैसा होता है, ट्रेडिशन कैसा होता है, कि पहन के भगवान को पैर छू के ऐसे मत्था टेकते हम लोग। और फिर हम लोग बहुत सारी चीज़ें। 8 hours later. हम लोग जा रहे हैं अभी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेस्ता को छोड़ने के लिए। उनकी फ़्लाइट है मॉस्को के लिए, वो आई थी यहाँ पे वेडिंग अटेंड करने के लिए, तो वेडिंग हो गई है और ट्रिप मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म। It only took one kiss to know that you're everything I need, everything I need. So tell me now, because I just have to know. Do I make you wanna run away with me? Do I really make you feel like you don't need anyone? Do I make you wanna run, just be wild and free? Do I really make you feel like you don't need anyone else, like you don't need anyone else? Because all I need is you. So I request that now, because I love her voice, so I want that Nesta you should sing continuously. I think I can. Yeah, of course. I sing I can. I love that people of the Mumbai know that. Vicky, what is the song lyrics? Can you say? Do you know who am I? She will complete that. Can you? We are ready for Mumbai. Do you know who am I? We are ready to Mumbai. Do you know who am I? I love that. No, the way you sing, no, this is like superb. People, like most of the foreigners, they not Indian, but according to me, they should be a little bit educated about that. Now. I'll sing until my they can use lungs that taxi give app. out your Of course. beauty. Like, in every country they use it. Depending on your understanding of safety, time, and safety place. If you are going across the dark street in not convenient time like 2 a.m. it can be dangerous, but if you are, for example, following only lightning streets and use, for example, taxi, it will be safety for you in every time. Yeah, perfect. Mostly when I've seen a lots of YouTubers traveling from like foreigners, and they are saying India is not safe, India is not like this, that, and I can't understand that thing, because you are educated enough. Use Ola, Uber. You are like, there's a train, there's like written everything charged. There are like restaurants, there are menu card, everything. How you gonna get cheated? I can't understand. If I travel to any country, these are basic things happen everywhere. These are the basic things happen everywhere. Yeah. But you need to be like mature enough, you need to understand it. Yeah, if you think about bad situations, it will happen. You shouldn't think about bad situations. It will not happen. That's perfect answer you have given. You need to be positive. You need to think like good things, not a bad. If your mindset is already that you are worried that if something will be bad happen to me, it will be. Yeah. It's only about like how it's called. Things came true. Like your ideas came true. It's like if you're thinking positively, positive moments came true. But if you're thinking not really positively, not really positive things came true. That's true. That's true. A lot of true. अभी आपको पता है, आप कहीं ट्रैवल करते हो तो आप एक रिसर्च करके लेते हो कि मतलब स्टार्ट टू एंड क्या करना है, मेरे को कहाँ रहना है, क्या खाना चाहिए, कौन सा एरिया लोकेशन सेफ नहीं है, तो फिर बाद में आप जाके वहाँ पे वो कंट्री को स्पॉइल नहीं खराब करोगे तो वो अच्छी बात नहीं है। Sing until my lungs give out you're beautiful. To say about Vicky, like you have like met him 3 days before from the starting when the time you land airport. So Yeah. I want to compare him with my, I don't know, with like my parents. They're like keep me everywhere. Yeah. Parents is like a very elder.
You got it. Yeah. Elder brother will be good one. Elder brother is Yeah, okay. Vicky's like elder brother. yeah. Who's taking care of you? Yeah. All the time taking care of, like showing everything, and it's like, thank you, Vicky. Help me. I wanna be more than just a friend. I'm looking for closure. So baby, pull me closer. Help me. I don't wanna be just a one night stand. I'm looking for closure. So baby, pull me closer. I've been scrolling through the text messages you sent me, trying to fill the holes where you left me empty. And when I think about it, get a little emotional, knowing that So this is like a last samosa of Nasta in India. Samosa is our favorite. And please ignore my voice, huh? Yeah, guys, open the ketchup. तो ये कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2018 रशिया से, जब मेरी पहली बार मुलाकात हुई नेस्ता से। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चल झूठी। It's like don't lie. मुझे लगा ये आम मुलाकात है जैसी मेरी हर ट्रिप पे होती है लोगों से, बट मैं यहाँ पे गलत था। you came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason, but I'll cherish every day until you come my way this season. बट हर चीज़ आपके मुताबिक नहीं होती है। इसी के साथ मेरा रशिया का ट्रिप ख़त्म हुआ और मैं रिटर्न बैक टू मुंबई अपने नॉर्मल लाइफ में अपने वर्क में बिज़ी हो गया। फिर कुछ दिनों बाद हमारी दूसरी मुलाकात हुई मुंबई में। दिल सदके जाए, तेरा सजदा जो हो जाए, नैना तेरा सजदा करके हाय खुशी से ही भर जाए। नैना तेरा सजदा करके हाय खुशी से ही भर जाए। ऐसा ना हुआ है पहले, हुआ पहली बार हाँ। रोकूं कैसे खुद को, मैं होने लगा प्यार हाँ। मैं जब कदम चलूं तो तेरे दर पे आ रुक जाए, नैना तेरा सजदा करके हाय खुशी से ही भर जाए। ये हमारी तीसरी मुलाकात थी दिल्ली में। सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना। ये 3 दिन के दौरान हमने शादी अटेंड की, The look you had upon your face when I said goodbye. I don't know why I let you go, but I was young and dumb, and all that I have left from that time is a picture of you. गुरुद्वारा गए, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच।
लॉन्ग ड्राइव पे गए। Nesta, are you excited? Yeah, I'm excited. Taj Mahal trip begins. स्ट्रीट पे डांस किया जम के, हमने बहुत एंजॉय किया और बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट की जो मैं वर्ड्स में बता नहीं सकता। मैंने अपने साइड से हर एक चीज़ ट्राई की कि मैं नेस्ता को इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन, इमोशंस, फ्रेंडलीनेस, हर एक चीज़ों से रूबरू कराऊं। नमस्ते, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। सो राइट नाउ वी आर एट दिल्ली एयरपोर्ट विद नेस्ता। Waiting for my plane. Yeah, so We it's, just eaten samosa. yeah, samosa is your favorite, and it's like I also eaten because of you. Because when I was looking at you, I was like, I was I feeling, want to do yeah. right now. So it's like her last day, and she has specially came here to attend the wedding. Did you enjoy? Yeah. It's really interesting to compare like Russian wedding from management side and Indian wedding. It's really different. So she is going back to like Russia, so I'm little like sad, but I hope that we meet as soon as possible somewhere in the world, in India or Russia or any other place of the country. What do you say about that? Yeah. Have a nice flight and take care of yourself. Bye guys.